Welcome everyone. I hope that everyone is doing well. Today we are going to talk about something very important in management, and that is decision making. So managers are considered very important for their organizations. Maybe if you remember कि when we talked about in our very first lecture हमने बात की थी कि why managers are important. So one of the reasons was कि managers take decisions. This is why they are important. So today we are going to talk about why managers uh, have to deal with different types of situations and what kind of decisions they take. So this discussion is coming from chapter number 7 from the book, and I would highly recommend you to go through this when you are revising this topic. So focus on chapter number 7. Okay, today we are going to discuss initially the first topic is the types of problems that managers face and the types of decisions they take. The second thing and the main part of our discussion is the decision making approaches, which means कि how managers take decisions. यानी managers का जो decision making का style होता है, उनकी जो approach होती है वो क्या होती है, वो एक decision लेने के लिए उनका तरीक़ाकार, उनका way जो है, we are going to discuss that briefly. Before we go on, let's briefly talk about what is decision making. Decision making के लिए जो सबसे important aspect है, that is the alternatives, that is this part here. ठीक है, the part of the options. तो options का होना ज़रूरी है. अगर options होते हैं तो ही वो decision count होता है, और अगर options are not available यानी आपके पास कोई और choice ही नहीं है, एक ही choice है, so then it means कि basically वो आपका decision नहीं है. So the which means कि बस आपको वही काम करना है, so it's not really a decision in that sense. Okay, so what you need to understand कि decision making happens when we have alternatives or we have options. नॉन रिकरिंग का मीनिंग होता है कि वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो चूंकि ये प्रॉब्लम यूनिक है, अनयूजुअल प्रॉब्लम है, विच मीन्स कि आपका जो डिसीजन है वो भी यूनिक है, वो भी जो है वो रिपीटेटिव नहीं है. एंड दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट. ये जो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस का जो पार्ट है, दिस इज एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग फॉर द मैनेजर्स, क्योंकि आप एक ऐसे इशू को फेस करते हैं, एक ऐसे प्रॉब्लम को फेस करते हैं जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, मैकेनिज्म नहीं होता, जब भी हम उसको अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम कह रहे हैं. एंड we take non-programmed decisions which are unique decisions for these kind of problems. So we have now discussed types of problems and types of decisions. Now let's move on and talk about the main point of our discussion, which is the decision making approaches. और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ मैनेजर्स टेक डिसीजंस. डिसीजन लेने का जो स्टाइल है वो क्या है मैनेजर्स का. Okay, so there are 4 approaches of decision making. First one is called rationality, then bounded rationality, then role of intuition or intuitive decision making, and the fourth one is called evidence-based management. So now let's move on about the first one, which is rational decision making. Rational का usually meaning होता है something which is logical. Okay, तो यहाँ पे meaning है कि when the decision is logical and it is not based on emotions. दो चीज़ें आपको याद रखनी है. When the decision is logical and not based on emotions. Logical का meaning होता है कि when you are following a certain pattern. Let's say अगर आप कोई डेटा चेक कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग में हैं और एक चीज़ आपको बता रही है कि अगर ये हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की या ये हमने लॉन्च की तो हमें लॉस होगा, तो यहाँ पे लॉजिकल डिसीजन क्या होगा कि आप वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है, आपको नंबर्स बता लग नहीं रहा आपको, बल्कि क्लियरली आपकी जो नंबर्स है वो बता रहे हैं कि आपको लॉस होगा.
तो इस तरह की चीज़ों को जहाँ हम एक्चुअली लॉजिक को यूज़ करें और हम अपने इमोशंस को इन्वॉल्व ना करें, दोज आर जनरली कॉल्ड, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैशनल। बट इन रैशनल डिसीजन मेकिंग इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। हियर you should keep in mind that number one, in rational decision making the assumption is, हम ये assume कर रहे हैं that managers have complete information about that situation. जिस भी situation के लिए वो decision लिया जा रहा है, they have the complete information. Number one. Number two, they have unlimited resources and unlimited time. यानी ना उनके पास कोई रिसोर्स की लिमिटेशन है, ना उनके पास कोई टाइम की लिमिटेशन। अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। एंड thirdly, they maximize the value. They maximize the value. So you have to remember, you have to keep in mind these three things. Number one, it assumes that managers have complete information. Number two, managers have unlimited time and unlimited resources. And number three, they maximize the value. Okay. Here you need to understand this term, maximize the value, maximizing the value. Uh, Maximizing value means when the decision maker is going for the most, is going for the highest point in his decision. इसको आप इस तरह समझें, when the decision maker is going for the best option and not settling for anything else. Let me repeat myself, when the decision maker is going for the best option and not compromising on that, यानी जब आप जो सबसे अच्छा डिसीजन है, जो सबसे आपका जो प्रायोरिटी का पॉइंट वन था, जो सबसे टॉप पे था, आप उसी को अचीव करना चाहें और उसके अलावा किसी और चीज़ पे सेटल ना हो। यानी लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब और आपका कोई सर्टेन आपके जहन में एक आइडियल जॉब है कि उसकी सर्टेन सैलरी हो, सर्टेन तरह की वो पोजीशन हो, तो जब भी आपको जॉब ऑफर आए आप ये देखें कि क्या वो सैलरी को मैच कर रहा है एग्जैक्टली क्या उस तरह की जॉब है कि अगर होगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग is called maximizing the value, where you are going for the टॉप मोस्ट ऑप्शन, जब आप सबसे जो बेस्ट या टॉप ऑप्शन है सिर्फ उसी को एम कर रहे हैं और उसके अलावा किसी और चीज़ पे सेटल्ड नहीं हो रहे हैं। सो वी हैव नाउ लर्न कि जो रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है इसमें तीन चार चीज़ें यू नीड टू रिमेंबर। लेट मी क्विकली जस्ट रिवाइज देम फॉर यू। नंबर वन, इट इज़ आवर अजम्पशन, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि डिसीजन मेकर हैज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। Number two, they have unlimited time and unlimited resources. Number three, they are maximizing the value. Okay. यानी वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। Practically, this rational decision making is only a theoretical concept. क्योंकि अगर आप इसकी कंडीशंस को देखेंगे तो यूजुअली ये पॉसिबल नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि किसी भी सिचुएशन में आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो या अनलिमिटेड टाइम हो या अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो। ये प्रैक्टिकल नहीं है, विच मीन्स कि ये जो मॉडल है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल या अप्रोच, दिस इज एक्चुअली अ थ्योरेटिकल अप्रोच और नॉट यूज्ड इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि इसकी जो कंडीशंस हैं, जो असम्पशंस हैं, वो एक्चुअली फुलफिल्ड नहीं होती हैं। नाउ लेट्स नेक्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड मीन्स लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। इसका ये मीनिंग है कि जो डिसीजन मेकर है वो कहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, रुक रहा है, उसकी कुछ लिमिटेशन हो रही है, कोई चीज उसको लिमिट कर रही है, स्टॉप कर रही है। सो इन बाउंडेड rationality or bounded rationality decision making, a decision maker
हैज़ लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज, उसके पास टाइम भी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। he or she does not have the complete information, उसके पास जो information है वो भी limited है, complete नहीं है, and they are satisficing and not maximizing. Now here it's an interesting term, satisfies. Let me tell you कि ये जो word है satisfies, this is not a word in the dictionary, क्योंकि ये एक actual English का उस तरह से word नहीं है, बल्कि it's a combination of two terms, satisfy and suffice. Okay, now you need to understand that satisfies दो चीज़ों से मिलके बना है। इसका मीनिंग है कि एक डिसीजन मेकर जब वो बाउंडेड रैशनैलिटी के अप्रोच को यूज़ कर रहा होगा, तो वो एक ऐसे डिसीजन को एक्सेप्ट करेगा या ऐसा डिसीजन लेगा जिसमें दो क्वालिटीज हो। वो डिसीजन उसको सेटिस्फाई करता हो और सेकंड वो उसके लिए सफिस हो। सफिस का मीनिंग होता है टू बी इनफ, काफ़ी होना। यानी एक ऐसी चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे या उसका डिसीजन लेंगे जो आपको सेटिस्फाई भी करेगी और आपकी उस ज़रूरत के लिए, उस वक्त के लिए काफ़ी होगी। Let's take a non-business example. Let's say that a family wants to buy a car. एक फैमिली कार बाय करना चाहती है और जाहिर है हर कोई ये चाहता है कि दे वुड बाय एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स, बट पीपल यूजुअली पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट। तो अगर कोई मैक्सिमाइजिंग वैल्यू को अप्रोच को फॉलो करता तो फिर वो उसी कार को परचेज करता जो उनका जहन था, जो उनकी टॉप प्रायोरिटी थी, और उसके अलावा कभी भी चाहे उनको कितना भी अरसा वेट करना होता, वो फैमिली कोई और कार परचेज नहीं करती। लेकिन हम देखते हैं कि जो एक्चुअल डिसीजन हम लेते हैं या फैमिलीज लेती हैं, वो ऑल दो आइडियल कार्स तो सबकी होती है, लेकिन आप उस कार को परचेज कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग आपको सेटिस्फाई करे और आपकी नीड्स के लिए काफ़ी हो। So this is called satisfies, and this is the opposite of maximizing value. Maximizing में हम सिर्फ टॉप ऑप्शन को एक्सेप्ट कर रहे थे, उसके अलावा किसी भी चीज़ पे सेटल नहीं हो रहे थे, और यहाँ पे हम उस चीज़ पे सेटल होंगे, यानी एज अ डिसीजन मेकर आप वो ऑप्शन चूज कर लेंगे जो आपको सेटिस्फाई कर रहा होगा और आपकी नीड्स के लिए काफ़ी होगा, विच इज़ कॉल्ड satisfies in this approach. So these two are opposing approaches. इनका जो स्टाइल है, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। हम बाउंडेड रैशनैलिटी में कहते हैं द मैनेजर्स, द डिसीजन मेकर्स आर रिस्ट्रिक्टेड, आर लिमिटेड, they have incomplete information, a limited time and resources. And in the rationality approach, we say that they have unlimited time, unlimited resources, and complete information. So these two are opposing approaches. Now let's move on and talk about the third one, which is a very interesting approach. इसका नाम है intuitive decision making. Intuition means, before इससे पहले कि आप इस decision making को समझें, let's talk about what is intuition. Intuition is an ability to know something without any proof. Okay, which means कि आपको कुछ फील हो रहा है कि ऐसा होगा या ऐसा करना चाहिए, बट यू रियली कांट टेल कि क्यों, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं कि जैसे हमें लग रहा होता है कि हमें लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। वो जो लगने वाला एक्सपेक्ट है, दैट इज एक्चुअली इंट्यूशन होता है, और ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट होता है। समटाइम्स पीपल से सिक्स सेंस, नो वी डू नॉट मीन दैट सिक्स सेंस, यहाँ हमारा मीनिंग नहीं है, बल्कि आपकी एक ऐसी फीलिंग जिससे जो आप आपको एक फीलिंग है कि यार ये चीज़ इस तरह से हो जाएगी, तो वो जो एस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड intuition. In intuitive decision making, we actually a decision maker actually base his or her decision on three things. Okay, इसकी जो बेसिस होती है, फाउंडेशन होती है इस स्टाइल की, वो तीन चीज़ों पे बेस करती है। द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, वो इंडिविजुअल जो डिसीजन ले रहा है उसका उस मैटर में, उस काम में कितना एक्सपीरियंस है, उसकी नॉलेज कितनी है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, ये हो गया उसका एक्सपीरियंस का पार्ट। ऑन द अदर साइड वी हैव दिस पार्ट ऑफ
जजमेंट। जजमेंट से यहाँ मीनिंग है नॉलेज, यहाँ जजमेंट से मीनिंग है डेटा, स्टैटिस्टिक्स, यानी एक आप अपना एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है वो स्टैटिस्टिक्स नंबर्स को भी यूज कर रहे हैं, रिपोर्ट्स को पढ़ रहे हैं और ये सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ यू आर एडिंग वन मोर थिंग एंड दैट इज योर फीलिंग्स, एंड दिस फीलिंग पार्ट इज एक्चुअली एट द कोर ऑफ इंट्यूशन। ये जो फीलिंग का जो पार्ट है, जो हमें एक चीज फील हो रही है कि इस तरह से होगी, ऑल्दो हम उसको प्रूव नहीं कर सकते कि हमें क्यों ऐसा फील हो रहा है, बट दैट थिंग इज एक्चुअली पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग। यूजुअली आप देखें कि जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन हम इस चीज पे लेते हैं। एक लेट्स से हमारा हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस होते हैं, बाकी सारी चीज़ें और चीज़ें होती हैं, लोग हमें बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं, बट वी फील कि ये चीज़ जो है वो इस तरह जाएगी, एंड सो। So in intuitive decision making, we rely on our experience and knowledge. We rely on data, statistics, reports, जिसको हम judgment कह रहे हैं, and the main part here is the feelings part. So you can again see that this approach is actually again the opposite of rational decision making. वहाँ पे हमने कहा था कि rationality का ये meaning होता है कि आपके emotions involve ना हो और सिर्फ लॉजिक की बेस पे, डेटा की बेस पे, नंबर्स की बेस पे या लॉजिक, ओवरऑल लॉजिक की बेस पे आप डिसीजन लें। बट हेयर वी आर सेइंग कि फीलिंग्स को भी इन्वॉल्व करें, और करें नहीं बल्कि वो खुद से इन्वॉल्व हो जाती हैं। There was a survey which was done by the HBR, Harvard Business Review, and it said that they asked managers, okay, which of these styles do you follow when you make decisions? And the majority of the managers said that they follow the intuitive decision making. ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ नंबर्स पे रिलाई करें, बल्कि मैनेजर्स का कहना था उस सर्वे में कि हम अपनी इंटुइशन को यूज करते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, जजमेंट के साथ साथ अपनी फीलिंग्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। So this is the third approach of decision. The last approach is called evidence-based decision making. Okay. This EBM actually came to management sciences from the medical science. Okay, जिस तरह medical science में when a physician, when a doctor is taking a decision, तो अपने decision के लिए कोई base बनाता है, कोई evidence बनाता है, जो कि samples हो सकते हैं, reports हो सकती हैं, x-rays हो सकते हैं, and so medical documents हो सकते हैं. The same idea is used in the management as well. So when the managers are taking decision, they also need to have evidence. उनके पास कोई evidence, कोई इस तरह का proof होना चाहिए कि why they are doing something, why they are making certain decisions. Now the question for you is, what is an evidence? हम management की field में evidence किसको consider करें? So there are certain categories. कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे categories हैं जिनको हम evidence consider करते हैं. The first of these things is the expertise and judgment of the person who is taking that decision. जो इंडिविजुअल है उसकी अपनी एक्सपर्टीज क्या है, उसकी अपनी नॉलेज क्या है, सो दैट इज कंसिडर्ड एन एविडेंस। आप इसको इस तरह समझे, व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, समटाइम्स जब आप उसको लेट से अपने कोई प्रॉब्लम बताने लगेंगे कि हाउ यू आर फीलिंग, तो आपकी बात सुनते ही दे वुड राइट स्टार्ट राइटिंग प्रिस्क्रिप्शंस। अभी आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन उन्होंने अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिख दी। क्यों? क्योंकि आपकी बात से उनको ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे पता चल गया था कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो उनका जो अपना एक्सपीरियंस है वो खुद ही उनके लिए एविडेंस है, उनको किसी रिपोर्ट की, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो यूज इन मैनेजमेंट कि जब मैनेजर्स अपने नॉलेज या एक्सपर्टीज या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे डिसीजंस लेते हैं। The second category is of the opinions or feedback of stakeholders. You might remember कि हमने stakeholders को topic discuss किया था जिसमें हमने एक list भी बनाई थी कि these are the primary and these are the secondary stakeholders. तो वो जो stakeholders हैं उनका opinion भी as an evidence use हो सकता है. For example, if on your social media platforms, if you are getting negative comments from your customers who are your stakeholders, then it's an evidence for you that there is something wrong. हो सकता है एज अ सीनियर मैनेजर आप
आपको प्रॉब्लम का पता ना हो, but at least you would know कि there is something wrong and that's why people are giving negative feedback. So तो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों, आपके कस्टमर्स हों, समटाइम्स इवन आपके सप्लायर्स हों, उनका जो ओपिनियन या फीडबैक है, that is also considered evidence in this approach. The next category is the external evidence. External evidence meaning any other data, reports that you could use. यानी let's say अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं तो स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट्स होंगी इकोनॉमिक डेटा पे, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे होगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स होंगी, आईएमएफ की रिपोर्ट्स होंगी, और इसी तरह डिफरेंट जो डेटाज होंगे, ये आपके लिए एक्सटर्नल एविडेंस बनेगा। तो इन योर डिसीजन मेकिंग आप जो जो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स या डेटाज को यूज़ कर रहे हैं, ऑल ऑफ दिस becomes an important part of योर डिसीजन मेकिंग अगर आप इस अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं एविडेंस बेस को। Then the last of the category is called the internal factors. You might remember in one of the lectures हमने internal factors को study किया था जहाँ हमने कहा था कि top managers, physical work environment, employees and culture are the internal factors. तो अगर ये internal factors में से कोई factor आपको कोई चीज़ बता रहा है, उस organization का culture कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, या उसके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर्स आपको पता चल रहा है, या उसके टॉप मैनेजर से, या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो दैट इज़ अगेन एन एविडेंस फॉर यू। यानी आप उस चीज़ को सीरियसली लेकर फिर आप अपना डिसीजन में उस बात को इंक्लूड कर सकते हैं। So these are the four categories of the evidences that we can use in this approach. So now let me just quickly uh, conclude what we have discussed today. We have talked about what is decision making. Decision making involves options. जब आपके पास options होते हैं तो आप decisions लेते हैं. Number two is the types of problems and the types of decisions. हम discuss किया है कि types के कौन कौन से types of problems होते हैं, उनके decisions क्या होते हैं. And lastly, we have discussed the four approaches of decision making. Number one is rationality, bounded rationality, intuition, and evidence-based decision making. I hope uh, you understood it, and thank you for listening.